Namaskar everyone. How are you all? I hope you guys are fit and healthy at your place. So today we are going to revise our PA2 syllabus, right? So in PA2 syllabus we have two chapters. Chapter number 4 soil and chapter number 7 parts of plants. So we will revise textbook exercises of these chapter. Okay? So open your textbook and let's learn all these objective type of question. Okay, see, let's understand objective type questions. Question exercise A, fill in the blanks with the correct words. See, your handwriting should be very neat and clean and make sure that all spellings are correct. Okay, so first of all, first one is blank provides water and nutrients to the plant. Who provides water and nutrients to plant? Options are soil and air. So who provides? It's soil, right? So take the soil and write down in a blank. Second one is soil is formed by the breakdown of blank. Soil form होती है, right? By the breakdown of blank. Rocks या plants? Of course it's rocks, right? So take the rocks here and write down in a blank. See the third one. The color of soil blank from place to place remains the same. Is it? No, it differs, right? I have already told you that if we go one place to another one, we'll see many kinds of soils, right? Now see the fourth one. The blank in the soil turns into blank when heated. So the water in the soil turns into vapor when heated. When we heat the soil, जो soil के अंदर water है, it turns into vapor, right? So write down water here, and in second blank you have to write down vapor. Now see the fifth one. When water is poured over soil kept in a jar, blank bubbles start forming. When water is poured over soil kept in jar, तो what start forming? It's bubble, right? तो वो क्या बाहर आ रहा है? So it's air, right? When water is poured over soil kept in a jar, air bubbles start forming. Air bubbles जो होते हैं वो form होना start करते हैं, right? Now turn the page number 45. Exercise B, choose the correct option. First one is, which of these do plants need to grow? मतलब plants को grow करने के लिए क्या चाहिए? What they need? तो options are air and water, light, soil, and option D, all of these. So plants need to grow with the help of air, water, light, and soil, right? All of these. So tick the option D here. Now see the second one. Which of these helps rocks to break down? Who helps rocks to break down, right? So options are sun's heat, option B rain, option C wind, and option D all of these. So suns of heat, rain, and wind helps rock to break down, right? So take the option D here, all of these. Now see the third one. Which of these does soil contain? What does soil contain? We all know. Options are option A humus, option B sand and clay, and option C pebbles. Option D all of these. See, soil contains humus, sand, clay, and pebbles all, right? So tick the option D all of these here. Now see the fourth one. Which of these is not true about humus? See, humus के बारे में
which thing is not true. Okay, keep it in your mind, it's not true. So options are option A, it is formed from dead remains of only animals. It remains, sorry, it is formed from dead remains of only animals. No, it is not true, है ना. Option B, it makes soil fertile. This is true. Option C, it gives nutrients to the to the plants. Yes, this is also true, right? It holds the water. Yes, this is true, but it is not true. It is formed from dead remains of only animals. Not only animals, it is the dead remains of animals and dead plants, right? So take the option A here and see the fifth one. Which of these animals live in soil? इनमें से कौन से animals है? They are living in soil. So options are option A, earthworms and beetles. Option B, ants and termites. And option C, owls and parrots. And option D, both A and B. So see, which of these animals live in soil? Soil में कौन रहते हैं? तो of course it's option A and B both, because all these animals are living in soil. So take the option D, both A and B here, and see the sixth one. Which of these is the grainy part of soil? बहुत ही easy one है. Which of these is the grainy part of the soil? Options are option A, clay, option B, sand, option C, humus, and option D, pebbles. See, so clay is smooth, right? Humus is also smooth. Pebbles are smooth, but they are stones. But sand is a grainy part, right? So take the option B here. Now see the seventh one. How long does it take to form a small amount of soil? If we want small amount of soil, so how long does it take? Options are option A, 1 year, option B, 2 years, option C, 3 years, and option D, thousands of years. So take the option D here, because it takes thousands of years form a small amount of soil, right? Now see the eighth one. Which of these animals do not live in soil? इनमें से कौन सा एनिमल है that do not live in soil? Options are option A, beetles, option B, snails, option C, fish, and option D, ants. So of course fish cannot live in this soil, right? So take the option C here. Now see the exercise C. Match the following. We have to match column A to column B and write down answer here, or else you can write down here also. Okay. First one is roots. So what is roots? Roots fixes plants to the soil. जो plants के roots होते हैं, they are fixes. They are fixed, right? वो कहाँ पे? To the soil. Now see the second one, soil. तो soil क्या है? It's a earthworm and leeches. इसमें क्या रहते हैं? Earthworm and leeches. These are the animals, right? Third one is humus. What is humus? So it is dead remains of plants and animals, right? So see the fourth one. What is clay? So clay is very fine pieces of rocks. Clay is very fine pieces of rocks. So take the write down C in front of fourth one, and see the fifth one, manure. So what is manure? Fertile soil. मैन्योर यानी खाद. तो खाद क्या करता है? सॉइल को फर्टाइल करता है, राइट? नाउ सी exercise 2, very short answer type questions. Exercise A, give one word for the following.
we have to answer in one word only. Okay, so first one is the top layer of the earth where plants grow. The top layer of the earth where plants grow, जहाँ पे plants grow करते हैं, and it is the top layer of the earth. So it is soil. It's so easy. Write down soil here. Now see the second one. Part of soil that is made up of dead remains of plants and animals. Part of soil. This is part of soil, and it is made up of dead remains of plants and animals. Right? So it is humus. Right? So write down HUMUS, humus here, and see the third one. Crops grow well in this type of soil. क्रॉप्स बहुत अच्छी तरह से उगते हैं कौन सी टाइप की सॉइल में? तो इट्स फर्टाइल. राइट, व्हाट इज़ फर्टाइल? फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं. राइट, तो क्रॉप्स ग्रो वेल इन द टाइप ऑफ फर्टाइल सॉइल. राइट, नाउ सी द फोर्थ वन. थिंग्स एडेड बाय फार्मर्स टू मेक सॉइल फर्टाइल. ऐसी क्या चीज़ें डालते हैं फार्मर्स जिससे जो सॉइल है वो क्या हो जाए? फर्टाइल हो जाए. तो इट्स मैन्योर, खाद. राइट, मैन्योर, MANURE, मैन्योर. नाउ सी द एक्सरसाइज B. Write 2 examples for each of the following. We have to write down two example each. Right, first one is soil provides these to plants. सॉइल इसे क्या प्रोवाइड करता है प्लांट्स को? तो इट्स प्रोवाइड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. राइट, नाउ टर्न द पेज नंबर 46. सी द सेकेंड वन. कलर्स ऑफ सॉइल. वी हैव टू राइट डाउन कलर्स ऑफ सॉइल हियर. सो यू कैन राइट डाउन एनी कलर्स हियर. राइट, एनी मीन्स जो सॉइल के कलर्स है. राइट, सो यू कैन राइट डाउन लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, रेड, ब्लैक, कोई भी. डन. थर्ड वन इज थिंग्स दैट सॉइल कंटेन्स. व्हाट डज सॉइल कंटेन्स? सो सॉइल कंटेन्स एयर, वाटर, मैनी थिंग्स. राइट, सो यू कैन राइट डाउन हियर. फोर्थ वन इज animals that live in soil. There are so many animals which are live in soil, so you can write down any 2 animals here. I have written earthworms and snails. Right, now see the exercises. Our first exercise, objective type questions. Exercise A, fill in the blank with the correct word. First one is the part of the plant that grows below the ground is called blank, यानी below the ground, ground के नीचे उग रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? shoot या root? Of course it's root. Right, so write down root in the blank. Second one is a blank root appears boozy and has no main root. एक ऐसा रूट जो बूजी दिखता है यानी जंगली दिखता है एंड उसके और रूट्स नहीं होते. राइट, उसका कोई पार्ट रूट नहीं होता. तो इट्स टैप रूट और फाइबर्स रूट. इट्स फाइबर्स रूट. राइट, वो एकदम जंगली दिखते हैं, बहुत सारे रूट्स होते हैं पर उसके कोई हिज नो मेन रूट, उसका कोई मेन रूट नहीं होता. सो इट्स फाइबर्स रूट्स. थर्ड वन इज द ब्लैंक कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के हर एक हिस्सों में वो वाटर एंड फूड लेके जाता है. तो विच पार्ट इज दिस? इज इट रूट और स्टेम? इट्स स्टेम. राइट, इट्स नॉट रूट. रूट क्या करता है? वो बिलो द ग्राउंड होता है और वो क्या करते हैं? दे कंसिस्ट फूड मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. सॉरी. फोर्थ वन इज The blank helps leaves to absorb light. कौन है जो leaves को लाइट ऑब्जर्व करने में, सोखने में हेल्प करता है? तो ऑप्शंस आर क्लोरोफिल एंड स्टोमेटा. तो ऑफ कोर्स इट्स क्लोरोफिल. राइट, दिस मेक्स लीव्स टू ग्रीन. राइट, वो ग्रीन बनने में हेल्प करता है और लाइट ऑब्जर्व करने में भी हेल्प करता है. फिफ्थ वन इज most flower changes into blank.
फ्रूट्स या सीड्स? ऑफ कोर्स इट्स फ्रूट्स, राइट? फ्रूट से हमें सीड्स मिलते हैं, फ्लावर से मिलते हैं, पर फिर भी वी flowers changes into fruits first, right? So write down fruits here and see the exercise B. Choose the correct options. Option. First one is roots of which of these plants are eaten by us? इसमें से कौन सा रूट का पार्ट है जो हम खाते हैं प्लांट्स के? ऑप्शन ए spinach and mint. Option B radish and carrot. Option C potato and ginger. And option D onion and mint. So of course radish and carrot are the roots, or these are the leaves, right? This is stem. Onion and mint are, see, onion is a root but mint is not, so radish and carrot are eaten by us, right? So take the option B here. This one is true. Turn the page number 75. Question number 2. Which of these parts of a plant grow on stems? Stems के ऊपर आते हैं, उन सारे parts के हमें नाम लिखना है. First one is leaves. Option B buds and flowers. And option C fruits. Option D all of these. So all of these are the part of the stems, right? So take the option D here. Now see the third one. Which substance gives leaves a green color? लीव्स को ग्रीन कलर कौन देता है? ऑप्शन ए वेन्स, ऑप्शन बी लेमिना, ऑप्शन सी स्टोमेटा एंड ऑप्शन डी क्लोरोफिल. सो ऑफ कोर्स क्लोरोफिल है वो लीव्स को ग्रीन कलर देते हैं, राइट? सो क्लोरोफिल सब्सटेंस गिव्स लीव्स टू अ green color. Fourth one is which of these roots does grass have? ग्रास के कैसे रूट्स होते हैं? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए टैप रूट, ऑप्शन बी फाइबर्स रूट्स, ऑप्शन सी बीट रूट एंड ऑप्शन डी लॉन्ग रूट. ऑफ कोर्स इट्स फाइबर्स रूट, राइट? देर इज़ नो मेन रूट, अलग अलग रूट्स होते हैं, तो इट्स फाइबर्स रूट. फिफ्थ वन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट बिकेम्स अ फ्रूट? फ्रूट कौन बन जाता है? कौन सा पार्ट है जो बिकेम फ्रूट? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लीफ, ऑप्शन बी बर्ड, ऑप्शन सी फ्लावर एंड ऑप्शन डी सीड. तो लीफ से फ्रूट बनता है? नो. बर्ड से? नो. ऑप्शन सी फ्लावर्स, येस, फ्लावर से फ्रूट बनता है. सो टेक द ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट वन. एंड सी द सिक्स्थ वन. Which of the following is the gas given out by leaves? इसमें से कौन सा गैस है जो लीव्स के द्वारा छोड़ा जाता है? तो ऑप्शन ए इज़ नाइट्रोजन, ऑप्शन बी इज़ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन एंड ऑप्शन डी एयर. तो ऑफ कोर्स इट्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, राइट? सो टेक द ऑप्शन बी हियर एंड सी द सेवेंथ वन. Which of these are edible seeds? इसमें से कौन सा है जो edible खाने लायक सीड है? ऑप्शन ए wheat and rice, ऑप्शन बी corn and bean, ऑप्शन सी cumin and black pepper, and option D all of these. So all of these seeds are edible seeds. ये सारे खाने लायक सीड है. हम हर खाने में इस सभी जो सीड्स है उनका यूज़ करते हैं. सो टिक द ऑप्शन डी हियर एंड सी द लास्ट वन, एट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्लावर दैट वी ईट? इसमें से कौन सा फ्लावर है जो हम ईट करते हैं, खाते हैं? तो ऑप्शन ए बनाना, ऑप्शन बी ब्रोकली, ऑप्शन सी जिंजर एंड ऑप्शन डी कैबेज. कैबेज इज़ अ लीफ. ओके, लास्ट वीडियो में नहीं, पर अभी शायद मैंने कैबेज बोला था. कैबेज एक लीफ है, पत्ता है. जिंजर इज़ अ स्टेम, banana is a fruit, but broccoli is a flower, right? So take the option B here. Now see the exercise 2, very short answer type questions. Exercise A, give one word for the following. So you have to write down one word answer here only, okay? So first one is the part of the plant that is above the ground. The part of the plant that is above the ground. Ground के above, ऊपर, not below. Below is a root, above is a shoot, right? So write down SHOOT shoot here. Second one is the root system in
which there is main root and many small roots growing from it. एक ऐसा रूट जिसकी सिस्टम है कि वो एक मेन रूट हो और उसमें से छोटे छोटे स्मॉल रूट्स ग्रो होना स्टार्ट करे, तो इट इज़ टैप रूट, राइट? सो राइट डाउन टैप रूट हियर. थर्ड वन इज थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ अ ट्री. ट्री का जो स्टेम होता है वो एकदम थिक होता है, राइट? स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ही, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वी कॉल्ड इट ट्रंक, TRUNK, ट्रंक. सी द फोर्थ वन, द फ्लैट सरफेस ऑफ लीफ. लीफ की जो फ्लैट सरफेस है उसे हम क्या बोलेंगे? वी कॉल्ड इट लीफ ब्लेड, राइट? सो राइट डाउन लीफ ब्लेड हियर. See the fifth one, last one, the process by which a seeds grow into a new plant. ऐसी प्रोसेस जिसमें जो सीड है वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाते हैं, तो वी कॉल्ड इट germination, right? So write down germination here. Now see the exercise B. Give two examples for the following. Our first one is plants with tap roots. We have to write down two example each. आप कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, जो भी आपको याद आए, जो भी आपको समझ में आए, यू कैन राइट डाउन हियर. सो फर्स्ट वन इज प्लांट्स विथ टैप रूट्स. सो इट इज़ बीन एंड मस्टर्ड. मस्टर्ड के क्या होते हैं? टैप रूट्स होते हैं, राइट? बीन और मस्टर्ड के, तो राइट डाउन बीन एंड मस्टर्ड हियर. सेकेंड वन इज प्लांट्स विथ फाइबर्स रूट. तो इट्स व्हीट एंड ग्रास. व्हीट और ग्रास के फाइबर्स रूट होते हैं. देर वॉज नो एनी मेन रूट, दे आर मेन रूट्स, राइट? सो इट कॉल्ड फाइबर्स रूट. And the examples of fibrous root are wheat and grass, right? Third one is stems that we eat. Stem जो हम खाते हैं, तो it is sugarcane and potato, right? Fourth one is flowers that we eat. Flower जो हम खाते हैं, it's cauliflower and broccoli. Fifth one is eatable seeds. जो खाने लायक seed है वो, तो it's corn and bean, right?